ओके। देखिए, अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ द इन्वर्स काइनेमेटिक्स। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इन्वर्स काइनेमेटिक्स बेसिकली क्या हमें इसमें समझना है। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम। ओके, देखिए, जब हमने इसके पहले फॉरवर्ड की पोजीशन एनालिसिस देखा था, दैट इज़ द योर फॉरवर्ड पोजीशन एनालिसिस, जिसे हम क्या कह रहे थे, दिस इज अवर फॉरवर्ड किनेमेटिक्स प्रॉब्लम। ओके, अब देखिए, हम इस फॉरवर्ड पोजीशन एनालिसिस फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में हमने क्या चीज़ देखी थी कि हमारे पास में क्या थे, हमारे पास में जो जॉइंट वेरिएबल्स थे हमारे। ठीक है, जॉइंट वेरिएबल्स में हमारे पास क्या क्या था कि हमारे जो जॉइंट ऑफसेट्स थे हमारे, ठीक है, या हमारे जॉइंट एंगल्स थे, ठीक है, या जो भी पैरामीटर्स हमें पता थे, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, ये हमारे पास था। देन वी हैव टू फाइंड आउट द एंड इफेक्टर पोजीशन। ओके, अब जो हमारा केस है, इस केस में जब ये हमने किसकी बात की, दिस वाज द टॉपिक ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। नाउ वी आर डीलिंग विद द इन्वर्स काइनेमेटिक्स। ओके, ठीक है, तो इन्वर्स काइनेमेटिक्स में क्या है, नाउ यू आर गिवन विथ अ एंड इफेक्टर पोजीशन। ओके, एंड इफेक्टर पोजीशन जो है वो हमें गिवन है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द जॉइंट वेरिएबल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड द जॉइंट वेरिएबल्स। अब हमें ये जॉइंट वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, हम ये जॉइंट वेरिएबल्स फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि ये जॉइंट वेरिएबल्स हमारे किस तरह से और क्या होगा। देखिए, जस्ट वेट। देखिए, जब हमने फॉरवर्ड पोजीशन एनालिसिस करना स्टार्ट किया था तो हमने कुछ कंडीशंस ली थी। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस थी हमारी, एक बार बताते हैं आपको। कुछ इक्वेशंस थी जो हम लेके चले थे। ठीक है, सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की इक्वेशन थी। T1 T2 T3 से हम n तक जा रहे थे, जितनी हमारे पास लिंक्स अवेलेबल हो रही थी। ठीक है, देन हमने ये देखा था कि हम इसको इन टर्म्स ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स भी लिख सकते थे। Q जो हमने लिखा था, Q इज Q1 Q2 अप टू Qn, और इस केस में हमें इसका एक पोजीशन वेक्टर भी लिखना पड़ता था, जो क्या होता था, A1 प्लस Q1 A2 एंड so on up to Q1 dot 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 up to nth link then an। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट था, ये जो फंडामेंटल रिलेशन था, ठीक है, हमारा ये जो हमने इन इक्वेशंस में हमारे फंडामेंटल रिलेशंस बनाए थे, ये रिलेशंस किसके बीच में थे, ये रिलेशंस हमारे बने थे किसके, जॉइंट वेरिएबल्स और एंड फैक्टर के ओरिएंटेशन एंड पोजीशन के बीच में। ओके, तो ये जो हमारी तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है, these equations helps us to establish the functional relation. Okay, to establish the functional relationship between the joint variable and the your end effectors ओरिएंटेशन एंड पोजीशन। ठीक है, ये देखिए कि जब हम फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में थे तो हम ये सारा का सारा पार्ट कंसिडर करके चल रहे थे कि ये जो हमारी इक्वेशंस थी, इक्वेशन 1 2 एंड 3, ये तीन इक्वेशंस हमें एक फंडामेंटल फंक्शनल रिलेशनशिप हमारा बता रही थी जॉइंट वेरिएबल्स और एंड इफेक्टर ओरिएंटेशन के बीच में। ठीक है, जब हम इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो इन्वर्स प्रॉब्लम किनेमेटिक्स प्रॉब्लम में हमें करना क्या है, वी हैव टू डिटरमाइन द जॉइंट वेरिएबल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू गिवन एंड इफेक्टर्स ओरिएंटेशन एंड पोजीशन। नाउ लेट आई राइट इट। So in the case of
inverse kinematics, okay, in the case of inverse kinematics, this problem consists of the determination of the joint variables, okay, determinations of the joint variables corresponding to a given end effectors, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन। ठीक है, ये जो हमारा इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम है, उस इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम का हमें क्या करना है ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब बात आती है कि इसका हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसका जो फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है वो हमें क्या करना है कि हमें जो मोशन के स्पेसिफिकेशन है ना, जो कि हमारे एंड फैक्टर के साथ में असाइंड है, ठीक है, उनका एक ऑपरेशनल स्पेस हम कंसीडर करेंगे विद द करस्पॉन्डिंग जॉइंट स्पेस मोशंस। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को एक बार मैं आपको बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम is of fundamental importance in order to transform the motion specifications assigned to the end factor in the operational space, into the corresponding joint space motion। ठीक है, अब देखो जब हम फॉरवर्ड किनेमेटिक्स पढ़े थे, फॉरवर्ड किनेमेटिक्स के इतने जो एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे, देन इन द फॉरवर्ड किनेमेटिक्स, ठीक है, जो एंड फैक्टर की रोटेशन मैट्रिक्स, ठीक है, और पोजीशन, ठीक है, इसको हम पोजीशन वेक्टर्स लिखते हैं, ये हमने कंप्यूट किए थे। और ये जब कंप्यूट किए थे इस समय हमारे पास क्या था, दैट इज द वी नो द जॉइंट वेरिएबल्स, हमें जॉइंट वेरिएबल्स पता थे। ठीक है, नाउ इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम जो है हमारी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दैट इज द योर इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, नाउ वाई, बात आती है कि ये कॉम्प्लेक्स क्यों है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का जो रीज़न है ना, वो रीजंस हमको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके कॉम्प्लेक्सिटी के रीजंस क्या हैं कि ये अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, नॉन लीनियर। ठीक है, इन द जॉइंट वेरिएबल, ये इक्वेशंस जो है हमारे पास में वो इन टर्म्स ऑफ जॉइंट वेरिएबल्स ये हमारे नॉन लीनियर्स हैं। ठीक है, एंड दस इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ओके, क्या टू फाइंड आ क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन। हमें हर बार एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन इसका मिल जाए, क्योंकि नॉन लीनियरिटी के केस में सॉल्यूशन निकालना इतना इजी हमारे लिए नहीं है। ठीक है, नंबर सेकंड कि मल्टीपल सॉल्यूशंस कैन एग्जिस्ट, ओके, दैट इज द मल्टीपल सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट।
अब ये बात आती है कि मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने का क्या है। मैं अभी आप लोगों को एक बात बताने की कोशिश करूंगा किस तरह से, ठीक है। और या आप इसको इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में आल्सो एग्जिस्ट। अभी तो हम जो केसेस कंसिडर करेंगे उनमें मान लीजिए तो 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ अ रोबोट मैनिपुलेटर्स, ठीक है, देयर मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज द, अगर हम यहाँ एग्जांपल्स की बात करेंगे, दैट सो यहाँ एग्जांपल्स इन द केस ऑफ योर काइनेमेटिकली रिडंडेंट रोबोट मैनिपुलेटर्स, ठीक है। अगर काइनेमेटिकली रिडंडेंट रोबोट मैनिपुलेटर्स हमारे पास में होंगे ना, तो उनके हमारे पास में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ केस हमारा बनता है वो क्या बनता है, उठा, ठीक है। तो ये जो जो 4 हमारे पास में अप्रोचेज हैं, ठीक है, कि इस इन 4 रीजन की वजह से हम ये कहते हैं कि इन्वर्स किनेमेटिक्स जो हमारी वो जो मोर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इस इन्वर्स किनेमेटिक्स में हम जो देखते हैं कि, ठीक है, कि इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। तो जो एक हमारे पास अप्रोच है, ठीक है, टू द इन्वर्स किनेमेटिक प्रॉब्लम, ठीक है, उसके हमारे पास में क्या हम कर सकते हैं, आइदर यूजिंग द एलजेब्रा और यूजिंग द ज्योमेट्री, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों के अलावा एक अप्रोच की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि जो हमारी नेक्स्ट अप्रोच है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, ओके, वी कैन फाइंड आउट द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन यूजिंग some successive approximation type, okay। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स वगैरह पढ़ी होंगी, ठीक है। तो हमारे पास में जो इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं वो ये हैं कि आइदर वी गो वाया द अलजेब्रा और ज्योमेट्री, और अदरवाइज हम उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। अब इन दोनों में अगर हम बात करते हैं ना, तो ये जो हमारी अप्रोच है, ये अप्रोच जो है वो हमारी मोर डिज़ायरेबल है, ठीक है, दिस इज़ मोर डिज़ायरेबल अप्रोच, ठीक है, व्हेन इट इज इन अप्लाइंग टू रियल टाइम कंट्रोल ऑफ रोबोट, ठीक है। अगर हमें रियल टाइम कंट्रोल ऑफ रोबोट करना है तो ये जो हमारी फर्स्ट अप्रोच है ना, वो अप्रोच हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस निकाल सकें कभी भी, जो हर किसी मैनिपुलेटर का, ठीक है, विथ सम आर्बिट्ररी स्ट्रक्चर, ठीक है। या कहने का मतलब है कि जस्ट अ वेट, दैट इज it is not always possible to find the numerical solutions, okay, of what, find the numerical solutions of any manipulator using any
आर्बिटरी आर्किटेक्चर। ठीक है, इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास में जो मैनिपुलेटर है उस मैनिपुलेटर के लिए हम कोई भी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम टाइप के एल्गोरिदम में अप्लाई कर दें, मतलब नॉट स्पेसिफिकली सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये सम है, इसमें आप कुछ और भी अनदर टाइप्स भी हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर मैनिपुलेटर पर उस चीज़ को अप्लाई कर सकें और उसके हमें सॉल्यूशन मिल सकें। क्योंकि होता क्या है, जो क्लास ऑफ मैनिपुलेटर्स जो इंडस्ट्री में हमारे यूज़ हो रहे हैं ना, जिसके क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस गारंटीड अवेलेबल हैं, वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, दैट इज द मैनिपुलेटर्स which are having गारंटीड सॉल्यूशंस। ओके, कि जिनके हम इन्वर्स किनेमैटिक्स के गारंटीड सॉल्यूशंस बना पाएंगे ना, दे आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में क्या है कि जो हालांकि जो मैनिपुलेटर्स हम लोग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं ना, वो हम जनरली क्या करते हैं, इसी टाइप के यूज़ करते हैं जिससे हमारे पास में उसका क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस अवेलेबल रहे, क्योंकि हम लोग नए क्लोज फॉर्म सॉल्यूशंस बनाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो जो एल्जेब्रिक अप्रोच अगर हम बात करेंगे तो जो सॉल्यूशंस निकालने की है, तो दैट इज द algebraic approach to the closed form solutions। इसका मतलब क्या है, it means to find the joint angles, okay, through your algebraic transformation of गिवन इक्वेशंस। अब इक्वेशंस क्या है, वही तीन इक्वेशंस। ठीक है, T1, सॉरी दिस इज नॉट एयर, T1 T2 T3 से Tn, देन Q इज Q1 Q2 Q3 अप टू Qn, देन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, कि पोजीशन वेक्टर आपने लिखा था, पोजीशन वेक्टर 1 मिनट में आपको रिपीट कर देता हूँ। पोजीशन वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर है हमारा A1 प्लस Q1 A2 प्लस Q1 अप टू Qn-1 टू n। ठीक है, तो इन तीन इक्वेशंस का ही हम क्या करते हैं, एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इनसे जॉइंट एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो है वो हमारी कौन सी अप्रोच है, एल्जेब्रिक अप्रोच है। और जो सेकंड अप्रोच जो हम बात करते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, इन द ज्योमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, वी फाइंड द जॉइंट एंगल्स यूजिंग ज्योमेट्रिकल ह्यूरिस्टिक्स। ओके, देखिए ये हमने ये देखा कि हमारे पास दो जो अप्रोच हैं, एल्जेब्रिक अप्रोच, जो ज्योमेट्रिक अप्रोच, उसमें हम कर सकते हैं। अब जो हम डिस्कशन में देख रहे थे बेसिकली, क्या चीज़ हमने देखी थी कि इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, अब मैं वो एक बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए मान लेते हैं ठीक है, दिस इज योर एंड इफेक्ट। ठीक है, दिस इज योर एंड इफेक्टर। अब देखिए
आपके पास में इस ये पोजीशन है एंड इफेक्टर की, ठीक है। इसको मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं पी एक्स वाई जेड, ठीक है, एंड अगर रोटेशन है तो संग में थीटा भी दिया हुआ है। अब आप देखिए कि आपको कहाँ जाना है, इस ओ पोजीशन पे, ठीक है। अब इस ओ पोजीशन पे आप कैसे जा सकते हैं, आइदर लाइक दिस ओ है, हम इस पॉइंट को एम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये अप्रोच 1 हो गई, ठीक है। लेकिन ये भी संभव है हमारे पास में कि हम देखिए हमें पहुंचना कहाँ है, पहुंचना है हमें इस जगह पर, ठीक है। एक रास्ता जो हमने ये डिसाइड किया कि इस तरह से जा सकते हैं, दूसरा रास्ता ये भी हो सकता है, ठीक है, कि ये देखिए ये लिंक को अगर हम इधर से इस तरफ मूव करा लें, ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरह से भी हम इस जॉइंट पर पोजीशन पे हो सकते हैं। तो नाउ हम यहाँ से देन इस तरह से भी अलजेब्रिक सॉल्यूशन है, ज्योमेट्रिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करके अपने ओरिजिन पे जा सकते हैं। तो क्या है, ये बताने का मतलब है कि इन्वर्स किनेमेटिक्स प्रॉब्लम्स जो है ना, उनके हमारे पास में मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और ख़ासकर जब जो हमारे इंडस्ट्रियल रोबोट्स हैं या जिनमें इतने तरह के जॉइंट्स लिंक्स लगी हुई हैं, उनमें तो क्या होता है कि वो तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे देते हैं कि पता लगा कि आपका जो एंड फैक्टर था लाइक दिस, ठीक है, कि ये जो एंड इफेक्टर है आपका, ये एंड इफेक्टर पता लग रहा है कि आपके पास में आप एक्स डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो थीटा डिग्री से, ठीक है। आप इसको वाई डायरेक्शन में भी थीटा डिग्री से रोटेट कर सकते हो, सपोज दिस इज थीटा 1 थीटा 2, देन यू कैन आल्सो ट्रांसलेट इनटू यू कैन आल्सो रोटेट इट इनटू द जेड डायरेक्शन थीटा 3। तो होता क्या है कि आपके पास में नाउ आप फ्री हैं। देखिए जब आप फॉरवर्ड किनेमेटिक्स देख रहे थे तो फॉरवर्ड किनेमेटिक्स में क्या था कि आपका बेस फिक्स था, ठीक है, ये आपका बेस फिक्स था, ठीक है। बेस फिक्स से नेक्स्ट पोजीशन पे जाना था, आपके पास में एंगल था कि उसी एंगल से आप अपना मूवमेंट करा लिए और उस मूवमेंट करते हुए, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हुए और अपने एंड इफेक्टर तक पहुंच गए। अब आपको ये बेसिकली पता ही नहीं है, ठीक है। अब आप सिर्फ क्या जानते हैं कि आपको एंड इफेक्टर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये जो एंड इफेक्टर आपका बना हुआ है, इस एंड इफेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आपके पास में ये हैं। अब इन कोऑर्डिनेट्स की मदद से आपको अपने बेस स्ट्रक्चर पर जाना है, ठीक है। तो ये जो सिचुएशन बनेगी, जो कंडीशन बनेगी, ये ठीक है, इसके सॉल्यूशन के हमारे पास में जो मल्टीपल सॉल्यूशंस आने वाले हैं, उन मल्टीपल सॉल्यूशंस को किस तरह से करते हैं, ठीक है। एक बार हम इन्वर्स किनेमेटिक्स पे एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, और वीडियो देखने के बाद फिर देन वी विल गो टू द न्यूमेरिकल एग्जांपल्स, ओके। Up until now, we've been focusing on the aspect of kinematics that's called forward kinematics. In forward kinematics, you are given the joint angles. The joint angles are things like theta 1, theta 2, d1, d2. And you're asked to find the location of the end effector. And once you've done that, you can use the location of the end effector and specifically the homogeneous transformation matrix H can be used to find not only the location of the end effector but also the location of a point from one frame to the next. Today, we're going to start talking about a different problem that's related called inverse kinematics. In inverse kinematics, you are given a desired location for the end effector. And you're asked to find the joint angles that result in that particular end effector location. Inverse kinematics ends up being much more useful to us as robotics engineers because typically this is the kind of a problem that we need to do with our robots. For example, we might know that we need the end effector, if it's, say, a gripper,
to become located where an object is located that we want to pick up. In order to place the end effector in our desired location, we need to figure out what joint angles will place the end effector in that location. And that kind of a problem is inverse kinematics. Unfortunately, the inverse kinematics problem is also somewhat more difficult than the forward kinematics problem. In fact, the inverse kinematics problem is so difficult that we can only solve it if we make a couple of assumptions to begin with. Our first assumption is that only the first 3 joints of the robot manipulator determine the position of the end effector, and we're not particularly going to try and make those first 3 joints put the end effector at the right rotation. All we're going to do is try and get those first 3 joints to put the end effector in the correct position or the correct location. Our second assumption is that the second 3 joints of the manipulator determine the orientation or rotation of the end effector. And so, taken together, this results in another assumption, and that assumption is that the manipulator consists of exactly 6 joints. For the first 3 joints, we don't have to make any kind of assumption about what configuration those 3 joints are in, as long as they're in a configuration that gives us a range of motion or a workspace in 3 dimensions. However, we have to make another assumption yet about the second 3 joints, and that is we're going to assume that the second 3 joints make up a spherical wrist. And I'll be showing you more in the upcoming videos about what is a spherical wrist and how do we use that to determine the orientation of the end effector. For this video, I'm going to focus specifically on how we do the position part of the inverse kinematics problem. In the position part of the inverse kinematics problem, we're trying to find some equations. And we want equations that relate the joint variables as inputs to the x, y, and z location of the end effector. Now, finding these equations is sometimes easy and sometimes quite difficult, depending upon what type of manipulator you have. The good news is that once you've derived the equations, you can use those equations anytime you encounter a manipulator of that given type. For example, once you have the inverse kinematics equations that apply to a Cartesian manipulator, you can use those equations anytime you have to do a calculation for a Cartesian manipulator. You don't have to rederive them for every new manipulator you might encounter. In this video, I'm going to show you how to derive the inverse kinematics equations for 1 or 2 manipulators, and then I'm going to give you the equations for the rest of the manipulators. Here, I've shown the kinematic diagram for a Cartesian manipulator. On this diagram, I've already drawn in all of the axes and all of the variables that we'll need in order to derive the inverse kinematics equations. Let's start out by making sure that we know what it is that we're trying to find from this kinematic diagram. We want to find the joint angles, D1, D2, and D3, that get the end effector into a position that we set. So, in other words, we want to find 3 equations. Our first equation will be the value of D1 as a function of x, 4, 0. That's the position of the x position of frame 4 relative to frame 0, y 0, 4, and z 0, 4. And we can also have this equation be a function of my link lengths, which here are A1, A2, A3, and A4. We also want a second equation that will tell us the value of D2 as a function of the same things as D1, and a third equation that tells us D3. If we have these equations, then we can put these equations into our robot control program
to command these three joints, which we have control over because we have motors on these three joints, in order to place the end effector in whatever location X, Y, Z we want it to be in. So how can we find these three equations for D1, D2, and D3? We will use the same process to derive these equations regardless of what type of manipulator we are looking at. And this process has two steps. One step, it doesn't particularly matter which order you do these two steps in, but one step is to look at the manipulator from the side view and write as many equations as you can from the side view, and then we'll turn the manipulator and we'll look at it from the top view. I'll show you what I mean for this Cartesian manipulator. First, we'll take a look at the manipulator from the side view. When I say that we're going to look at the manipulator from the side view, what I mean is that we're going to imagine that your eye, where you're going to look at it from, is going to be over here, and you're going to look in this direction. When you look in this direction at the manipulator, it will look something like this to you. I'm going to draw it down here in the side view. You'll see this same stick sticking out here, and you'll see X0 pointing to the right. I'll do this in the same colors as in the diagram. X0 will be pointing to the right, and Z0 will be pointing up, but you won't be able to see Y0 because Y0 is pointing into the page from your point of view. You will then see a square here, and this square is this square, the back of this joint. The frame that you will see for frame 1 will have Y1 pointing up, and it'll have X1 pointing to the left, but Z1 will be invisible because it's pointing directly into the page or into the screen. Now, joint number 2 will be invisible to you looking from this point of view because joint number 2 is completely hidden behind joint number 1. I can, however, draw in some of the axes that you might see. You will be able to see Z2 pointing out to the right. And you'll be able to see Y2 pointing up. But X2 will be invisible. Finally, joint number 3 you will see positioned over here, connected with its link, and you will see parts of its frame. You'll see Y3 pointing to the right and Z3 pointing down. Finally, you'll see the link connecting to the end effector pointing down, along with portions of its frame, Y4 pointing to the right and Z4 pointing down. Now, I'm also going to label on this picture some of the variables that we can see in the picture. For example, we can see that this link length is A1, just as it's labeled up here in the diagram. And we know that the distance between here and here is equal to the link length, A3, plus however much this joint variable has been extended, B2. And also we know that this distance right here is equal to A4, the length of this link, plus D3, however much this joint has been extended. Once I have this side view drawing, I can write some equations for the joint variables as a function of the end effector. I'm going to do that by using the geometry of this picture. One equation that I can write is representing the x position of the end effector. The x position of the end effector is right here. This is the x position of frame 4 in frame 0. What is this distance equal to in terms of my joint variables?
using the values that I've drawn on the distances in this drawing, we can see that x04 is equal to this distance up here, a3 plus d2. I can then change the order of this equation to write that d2 is equal to x04 minus a3. And that gives me one equation that expresses my joint variables in terms of the position of the end effector. There's one other equation that I can write from this diagram of the side view. Let's write this other equation. We can also write an equation for the y position of the end effector. The y position of the end effector is right here. This is the y position of frame 4 relative to frame 0. Can we write this distance in terms of my joint variables? We can, and we can do it like this. The y position of frame 4 relative to frame 0 is equal to this complete distance, which is a1, minus this distance over here. Now, we can change the order of this equation also to give us an equation for d3. Grammarly does more than catch errors. And I see that I just made a mistake here. It's actually not y04. It's actually z04, because z0 is the one that's in this direction. So I'm going to erase my y here, and I'm going to write in a z instead. So now I've gotten 2 of the 3 equations that I need. I still need to come up with an equation that relates d1. If we go back up to our kinematic diagram, here's d1. If you see the direction of d1, you see that when we look at this manipulator from the side, d1 is invisible to us. So we won't be able to write an equation for d1 from the side view. Instead, we're going to have to look at this manipulator again from the top view in order to get an equation for d1. Let's do that now. When we look at this manipulator from the top view, we're going to put our eye up here, and we're going to look down, straight down onto this manipulator. And when we do that, we're going to think about what this manipulator will look like when we look down from the top. Here's what it will look like. First, we'll see joint number 1, and the axes that we'll see on that will be z1 pointing in that direction, and we're going to see x1 pointing off to the left. y1 will be invisible to us. However, we'll still be able to see some of the axes from the 0 frame. For example, we'll be able to see x0 pointing off to the right, and we'll be able to see y0 pointing in the same direction as z1. Next, we'll have the link leading to joint number 2, and we'll see some of the axes from joint number 2. We'll see z2, and we'll be able to see x2, but we won't be able to see y2. Finally, we have joint number 3 over here. And we have the axes that we can see from joint number 3, which will be y3 pointing to the right and x3. But z3 will be invisible. We also won't be able to see the end effector, but we will be able to see some of the end effector axes. We'll be able to see y4 pointing in the same direction as y3. And we'll be able to see x4 pointing in the same direction as x3. Now finally, I need to write in my link lengths and joint variables. Over here, we have a2 plus b1
being the distance between the origin of frame 1 and the origin of frame 2, as we can see over here. The distance between the origin of frame 2 and the origin of frame 3 will then be equal to A3 plus D2. Remember that what we're trying to do is we're trying to write another equation where we relate the value D1, which we weren't able to see in the last view, and relate that to the location of the end effector. So how could we do that? D1 is in the expression that relates the vertical distance here between the origin of frame 0 and the origin of frame 2. In terms of the location of our end effector, which value, x, y, or z, does that represent? Well, y0 is the one that is pointing in this direction. So this distance here is equal to the y position of frame 4 relative to frame 0. So I can write an equation like this. The y position of frame 4 relative to frame 0 is equal to this complete distance, a2 plus d1. I can then rearrange this equation to say that d1 is equal to y04 minus a2. And that gives me my third equation. So I now have three equations and three unknowns, x, y, and z locations of the end effector that I can use to calculate the joint variables to get my end effector to a specified x, y, z location. I did the Cartesian manipulator derivation for you first because the Cartesian manipulator derivation is the easiest one. In general, the more prismatic joints that you have in your manipulator, the easier it is to derive the inverse kinematics. And the more revolute joints you have, the more difficult it is to derive the equations. In the next video, I'm going to show you an example with a देखिए ये जो अभी वीडियो हम लोगों ने देखा था ये यूट्यूब से मैंने डायरेक्ट वीडियो आपको चलाया है, ठीक है. दिस इज़ द ऑथर एंजेला सोडरमैन. सो वी आर वेरी हाईली थैंकफुल टू द ऑथर कि उनका ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो हमें पता लगा इन्वर्स किनेमैटिक्स का. अभी जो न्यूमेरिकल्स हमें इन्वर्स किनेमैटिक्स पर देखने हैं वो पूरा पार्ट मैं आप लोगों को कराऊंगा. ये प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस चैनल पर जाके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, बिकॉज हम लोग इसको अपनी स्टडी में ले रहे हैं. तो वी शुड डेफिनेटली एक्नॉलेज द ऑथर. और आई थिंक द इन्वर्स किनेमैटिक्स का जो बेसिक्स है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कुछ बताने की कोशिश कर दी है, वो आप लोग समझ गए होंगे. अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर्स कंसीडर करते हुए, और उनके इन्वर्स किनेमैटिक्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. तो आई थिंक आई हैव डन फॉर द टुडेज क्लास. देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास द इन्वर्स किनेमैटिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मैनिपुलेटर्स. थैंक यू ऑल.